Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video, I will be covering about the meaning of prompt corrective action and the revisions that took place in the year 2017 and 2021. So all the students who are not from commerce background also, so this information will be very informative for you also. So let's get started. So you would have heard of Yes Bank crisis, Lakshmi Vilas Bank failure. So all these failures in the banking industry is very common. So RBI in the year 2002 came up with prompt corrective action, right? Which is also called as PCA. Now what do you mean by PCA? So if RBI feels that there are certain banks whose financial records are weak, they are weak banks. So in order to protect those banks from failure in future, the RBI will put these banks under PCA framework, right? So PCA framework is basically the banks will be under RBI's radar. The RBI will keep on reviewing, will keep on seeing those banks performances, right? क्योंकि RBI को लगता है कि आगे चलकर ये कहीं फेल ना हो जाए. So these banks will be under RBI's review. ठीक है, वो उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेगा. Now there will be certain conditions on the basis of which RBI will monitor these banks and put it in PCA framework. वो क्या कंडीशन होगी? अगर आप एक बैंक के बारे में सोचो, आपको ये सब नहीं पता बट आपको थोड़ी बहुत बैंक की नॉलेज है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रेशियोज फॉर बैंक्स? फर्स्ट कम्स द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. Second comes the asset quality of the bank, which is measured using NPA ratio. And third is the profitability of banks, which is measured using ROA, right? So these are the three ratios, on the basis of which RBI will put certain banks in PCA framework. So if all those who don't know what capital adequacy ratio is, you can go and watch out to my video on Basel norms. I've already made a video and I've covered capital adequacy ratio in detail, talking about how do you measure it with an example. So these are the three ratios on the basis of which RBI will put certain banks under PCA. Okay? Now there should be certain limits set by RBI, right? And if you don't fulfill that criteria, that limit, then that bank will come under PCA. ठीक है, तो अब पहला आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. आपको ये पता है ना कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% पे सेट हुआ था. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फ्रेमवर्क ऑफ पीसीए. ठीक है, 17 और 21 की अभी हम बात करेंगे आगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फ्रेमवर्क. सो द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो was set at 9%. So all those banks whose capital adequacy ratio is below 9% will come under PCA framework. Second is NPA ratio. So all those banks which crosses 10%, right? This is the limit. अगर आपके NPA 10% से ऊपर गए तो आप PCA framework में आओगे. Third is ROA. If your ROA is less than 0.25%, then that bank will come under PCA framework as per PCA framework 2002. So this was the criteria for 2002. आप खुद सोचो ना, बैंक के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि उसके पास इनफ कैपिटल हो ताकि अगर आगे कोई भी क्राइसिस का पीरियड आए तो उसके पास एब्जॉर्व करने के लिए इनफ कैपिटल है, राइट? Which is set at 9%, right? ये हमने बात करी 2002 framework की. Now, if I talk about the revisions, the first revision took place in the year 2017. Now, what was those revision? So, in 2017, RBI, after the recommendations of various committees, decided to break this PCA into 3 parts. PCA को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया. फर्स्ट इज थ्रेशोल्ड 1, सेकेंड इज थ्रेशोल्ड 2 एंड थर्ड इज थ्रेशोल्ड 3. अब हम इसके बारे में बात करते हैं.
ओके, सो द रेशियोज रिमेन द सेम जो 2002 में रिकमेंड करी थी. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नेट एनपीए रेशियो, ROA ratio, and there are two ratios which are added. First is tier 1 equity capital and then is tier 1 leverage ratio. These are the two ratios which are added from 2017, right? Talking this in detail now, ये 3 थ्रेशोल्ड क्यों बनाए गए और ये क्या मतलब है इनका, ठीक है. अच्छा, आप ये ध्यान से सुनना. So all those who have not watched, I'm again saying go and watch my video on Basel norms. You'll get a clear understanding on what Basel 1, 2, 3 says about and what is capital adequacy ratio. तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% पे सेट किया गया था जो हमने बात करी 2002 में. बट क्या आपको पता है बेसल 3 आया था, ठीक है. आफ्टर कमिंग अप ऑफ बेसल 3 देयर वाज वन मोर रेशियो व्हिच वाज एडेड, which was according to Basel 3 norms, that is capital conservation buffer ratio, which is called as CCB, capital conservation buffer ratio, which was set at 1.25%. ठीक है, वो 1.25% पे सेट करी गई. So now your capital adequacy ratio becomes 10.25%. 9 से वो कितने पे इंक्रीज हो गया, 10.25% पर, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू 2017 फ्रेमवर्क, ऑल दोज बैंक्स which has capital adequacy ratio of 7.75% but less than 10.25%. 10.25% आपका क्या है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का. सो if it is less than 10.25% but greater than 7.75, you will come under threshold 1, ठीक है. If it is greater than 6.25 but less than 7.75, you will come under threshold 2. If it is less than 3.625%, you will come under threshold 3. So have you understood this point? Capital adequacy ratio पहले 9% था, 1.25% बढ़ा दिया बेसल ने, 10.25 उसकी मिनिमम लिमिट सेट कर दी गई, ठीक है. नाउ बेसल 3 टॉक्स अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज टियर 1 कैपिटल. बेसल वाली वीडियो में मैंने ये सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है, व्हाट इज टियर 1, व्हाट इज टियर 2, राइट. ये वीडियो देखने से पहले बेसल वाली वीडियो देख लीजिए. सो टॉकिंग अबाउट टियर 1 कैपिटल, बेसल ने बोला ये टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बट बेसल हैज बाइफरकेटेड दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनटू 2 पार्ट्स, टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल. सो बेसल सेड दैट टियर 1 कैपिटल शुड बी 5.5% प्लस 1.25% ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है. So now the total tier 1 capital should be 6.75%, ठीक है. मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10.25% थी, उस 10.25% में से 6.75% should be tier 1 capital, right? This is the minimum criteria. तो ये आई आपकी अगली रेशियो tier 1 equity capital, which says that if your tier 1 capital is less than 6.75% but greater than 5.125%, you will fall under threshold 1. If it is greater than 3.625 but less than 5.125, you will come under threshold 2. And if it is less than 3.625, you will come under threshold 3. तो ये आपने दूसरी रेशियो की बात करी, वो है टियर 1 इक्विटी कैपिटल. ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर लिया, चलो आपका 10.25% से ऊपर है, बढ़िया है, बट टियर 1 कैपिटल मेंटेन नहीं किया तो आप नहीं आओगे. RBI says that if you breach any of the ratios, any of the mentioned ratios, you will come under PCA, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपने चलो यार 10.25 तो मेंटेन हो गया तो मैं नहीं आऊंगा, बट टियर 1 तो नहीं मेंटेन किया. अगर टियर 1 मेंटेन नहीं किया तो आप इसमें आ जाओगे, ठीक है. सो
Till here we have talked about first ratio, that is capital adequacy ratio. ठीक है. Second ratio is net NPA ratio. If your NPA is between 6 to 9%, you will come under threshold 1. If it is 9 to 12, you will come under second criteria, and if it's more than 12, then that is a danger zone, which means threshold 3. ये threshold का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है फर्स्ट वाला, चलो आपने थोड़ा बहुत ब्रीच किया, कोई बात नहीं, आप पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे. जैसे कि बैंक आपको बोलेगा, सॉरी आरबीआई आपको बोलेगा कि ये वाला बैंक अगर आप इसमें आते हो थ्रेशोल्ड 1 में, देन you are not allowed to distribute dividend to your shareholders, right? If you come under threshold 2, then the restrictions will increase further. फर्स्ट वाली रिस्ट्रिक्शन तो आएंगी जो फर्स्ट थ्रेशोल्ड में है, प्लस और कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी. जैसे सेकंड अगर आप सेकंड थ्रेशोल्ड में आते हो तो आपकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगी. जैसे आप अपनी बैंक की जो ब्रांचेस है उसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, सो देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांचेस. इफ यू कम अंडर थ्रेशोल्ड 3, दैट मीन्स यू आर अंडर अ डेंजर जोन. सो इन दिस योर रिस्ट्रिक्शंस विल बी higher, like you will not be able to give salary to your management and all. So the restrictions is the highest in threshold 3, right? Talking about the next ratio, that is ROA. 2002 में ROA set हुआ 0.25%. In the year 2017, this ratio was little relaxed, and RBI said that if the bank is under losses, which means if you have a negative ROA for 2 years, you will be under threshold 1. If it is negative for 3 years, under threshold 2. If it is negative for 4 years, you will come under threshold 3, right? Next important ratio which is added in 2017, which was not there before, is tier 1 leverage ratio. You understand what leverage is? Leverage is the long-term loan which bank has taken from outside, right? So tier 1 leverage ratio means आपने अपने लोन, आपने कितना लोन लिया हुआ है इन कंपैरिजन टू योर टियर 1 कैपिटल. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास उतनी कैपिटल ही नहीं है और आपने उससे बहुत ज्यादा टाइम्स लोन लिया हुआ है, राइट? सो वील चेक टियर 1 leverage ratio. RBI says that if your ratio is, this ratio is 25 times, then you will come under threshold 1. If this ratio is 28.5 times, then you will come under threshold 2, right? So these are the ratios these are the prompt corrective action framework given in 2017. So basically there are two ratios which are added. First is leverage ratio and second is tier 1 equity capital. And from 2017, RBI has divided PC under 3 threshold limits, right? And the restrictions will be imposed accordingly. Okay, so I hope it is clear till here. Talking about PCA framework 2021. So again in 2021, RBI came up with a document, giving some revisions on PCA framework. Now what was that revision? ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया था कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो 1.25% था, उसको इंक्रीज कर 2.5% कर दिया. मतलब जहां भी 1.25 था वहां कितना हो जाएगा 2.5. इसका मतलब ये जो 10.25 था अब कितना बन जाएगा, ये 11.5, राइट? सो योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 11.5. आप इन पूरी टेबल में 1.25 और ऐड कर लो, सो दैट विल बिकम कैपिटल प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क 2021 का रिवीजन. क्या ये वाली रेशियो में कैपिटल एडिक्वेसी और टियर 1 में आप 1.25% और ऐड कर लो. सो यू ऐड इट हियर, यू ऐड इट हियर, राइट? इन सब में 1.25% ऐड हो जाएगा. वन मोर रिवीजन which was there in 2021 was RBI has deleted ROA from the criteria for the PCA.
उन्होंने बोला अब हम आरओए की बेसिस पर बैंक्स को जज नहीं करेंगे. सो द रेशियोज विच आर लेफ्ट आर capital adequacy ratio, net NPA ratio, leverage ratio and tier 1 ratio. This ROA is deleted, right? So I hope this video was informative for you. So if you liked my video, please click on the like button, and if you have any doubts, you can comment on the box. Thank you so much for watching.